Namaste, Jai Hind and welcome to this edition of The Right Stand. On the 31st of July, the VHP and Bajrang Dal call for a yatra, a 84 Kosi yatra from the Nalkeshwar temple in Nuh's Nalhad area, where hundreds had gathered to be part of it. The yatra follows the route going to the Pandav Kalan Shiv temple, that is a Shiv temple from the times of the Pandavas, Pandav Kal Shiv temple in Firozpur, Jhirka, before concluding at the Radhakishan temple in Singar village in Haryana. But hours after this yatra began, stone pelting commenced in an area after there was sloganeering. Within minutes, clashes erupted, arson and violence spread across Nuh, and Haryana police was caught unawares. Even as the situation continues to remain tense, the Haryana police has suspended internet in Nuh and imposed Section 144 in several areas. The Haryana government has appealed for peace and alleged a larger conspiracy. The Chief Minister himself has pointed at the violence being pre-planned or motivated. But the question remains, how did law enforcement not know? Now have a look at these details, ladies and gentlemen, and some of the visuals that point to the fact that there were a certain level of preparedness. Masked rioters attacking a hospital. Why? Breaking down the glasses, burning down a vehicle parked right outside, knocking on the doors, threatening the people inside, stone pelting happening from rooftops. How did those stones reach there is a question that comes immediately. People stuck inside a temple and surrounded and being challenged for a long time. Shops that have been set ablaze, vandalized. People who've been looted, their vehicles torched. Let's try and tell you what happened on the 31st of July, the entire timeline of the events. 10 a.m. the VHP Bajrang Dal Yatra gets underway. Around 12 noon, soon after, about between 11:30 and 12, this whole thing happened. Stones were pelted, sloganeering has happened, clashes, violence, and this happens across Nuh. And this is an annual Yatra, mind you. This is not the first time this is happening. Around 3:30, things start escalating. By 5:30 p.m., Haryana government suspends the internet. 6 p.m., violence spreads to nearby areas including Gurugram, Palwal, Faridabad, and even Sohna. In fact, in some places, the Haryana police has now imposed Section 144. These are the areas where currently, even now, Section 144 remains imposed in Nuh, in Palwal, in Gurugram, in Rewari, in Faridabad, and of course the Sohna region and those entire areas. So you see that entire circle towards the south of Haryana, in and around the national capital region. That's the place where you see largely severe clampdown. In fact, 20 battalions of the CRPF have also been put down there to try and help with the arrangements there. Flag marches have been conducted and the cops are on the move. Now, the VHP and the Bajrang Dal were carrying out this procession, but what triggered this unrest? One, an objectionable video from a murder accused, Monu Manesar, who's been absconding for about 6 months, and suddenly this video surfaces. But this video has been doing the rounds in social media for about 5 to 6 days. It didn't surface only yesterday or day before. Failure of the cops and perhaps the law enforcement to gauge that the tempers were running high, especially with the kind of exchanges that were being witnessed or that could be seen on social media. A possible link with the crackdown on this Jamtara type cybercrime frauds, which has now become a hub there in this particular region itself. Now, could that be another reason? But is the violence linked to the crackdown on cybercrimes? Nuh in Haryana has been infamous for being India's most backward district and has recently evolved as a hotspot for cybercrimes across the country. Unemployment, backwardness, lack of opportunities have given rise to violence, especially cybercrimes. But is this the reason for what unfolded on the 31st of July? Crackdown on cybercrimes in Nuh in the last few months has only intensified. As of June 2023, the cybercrime cell has blocked 5 lakh SIM cards that were used in Mewat region for cyber fraud across the country. Alleged scams, fraudulent calls from Nuh on the radar. As per reports, during the raids in the area, cops recovered several fake Aadhaar cards, ATM cards, etc. An intriguing aspect of the violence was a targeted attack at a cyber police station by the protesters. Apparently, a passenger bus was also looted after the occupants were brought down from it. And later, the protesters tried to ram through the main gate of the cyber police station with the same bus. Failing to do that, the protesters then rammed into a wall of the police station and entered there, trying to or attempting to burn the police station down. The state government has called it a pre-planned conspiracy, but can the Kakkar government absolve itself? Is it police inaction that led to the unrest? Could this mayhem have been averted? Some big questions that remain.
Why did it take so long for the Haryana police to react? Local intel failure to gather ground information and also to corroborate what was happening on social media, and to say that this could turn out to a manifest on ground. No action taken after Monu Manesar released this video. Did they not try to trace it? Why did they not block the broadcast and pushing of it? Cops, did they fail to gauge the already simmering tensions in Nuh? How did they have access to arms and ammunition, these rioters? Big question. How were the rioters given a free run? Now, is there a mastermind to this rioting? How is it that they were ready with stones from rooftop and ready to pelt? And did they deliberately target certain hotspots or certain people and certain groups? Is there an ulterior motive behind burning or the attempt to burn this cybercrime cop station? These are all big questions that remain. In fact, ladies and gentlemen, we've just got more news. In another incident of arson, 4 shops, eateries and scrap shops have been set afire in Sector 66 in Gurugram. No injuries have been reported so far, but yet again, the incident continues to simmer. It's not absolute return to peace, even though Nuh remains peaceful. Neighboring regions are now seeing a certain amount of boil. Let's go across to Anshul. Anshul joins us live. Anshul, it's been a hard, long day for you. You've been running around and you've been chasing and looking at the stories across the various areas, regions in and around Nuh in this entire Mewat region. Now it looks like it spilled over into Gurugram. What happened here? Well, definitely. The police is, in fact, people, the locals are saying that this is the reaction of the action that happened in Nuh and the manner in which the entire violence broke out. Now, I'll just try and show you the situation on the ground. If you could see over here, heavy police deployment has been made on the Sona Road. Now, remember where this incident has happened in Gurugram. That is approximately 7 to 8 kilometers away from this location, and hence heavy police deployment has been made. Now, what happened in Gurugram is that at least 3 to 4 shops were looted. Things were thrown out in the open, and one scrap shop was set on fire by the protesters. Post that, as soon as the police got that information, heavy police deployment was made on the spot, and at this point in time, approximately 10 to 15 minutes ago, the latest report that we have gotten from that area is that the situation is under control, and this is not an isolated incident that has happened in Gurugram. In fact, in Palwal as well today, there were cases of small rioting that had happened, but yes, since there is heavy deployment of police forces in this entire area, and Section 144 and curfew has been imposed in parts of Gurugram, Sona, Nuh, Palwal. All these areas are now under Section 140. Under Section 144, and heavy curfew, strict curfew has been Right. imposed. So yes, not many people are being allowed to come out on the roads, and that is the reason why we are seeing these isolated incidents. But yes, the biggest challenge in front of the police and the administration is to make sure that there is peace that prevails and some sense prevails between both the communities, so that There is a big huddle of cops behind you, Anshul. Who are these people? Why is there such a big huddle of cops behind you? As I mentioned, that the incident that has happened in Gurugram is approximately 7 to 8 kilometers away from here, and since I am with the OB van, it is getting difficult for me to take the OB van into such riot hit areas, and hence this is the main shock in which the police has been deployed. They are frisking all the vehicles that are going through these routes, making sure that no antisocial elements gets to enter anywhere close to Gurugram, which is already very, very tense. In fact, senior officials of the police are also deployed on the ground just to make sure that the law and order situation remains under control, and confidence is instilled amongst the people that yes, the police and the administration is still active, because yes, as you rightly mentioned, Anand, there are several questions that the police needs to answer. They haven't answered even a single question. The answer that we have been getting from all the police officials, from the IAS officers, from the district collectors, is that the main focus now is to make sure that peace is reinstated in all these riot hit places. Post that, they'll fix responsibility as to who was responsible, because remember, the SP of Nuh was on leave when this Shobha Yatra was being carried out, and as you rightly mentioned, that it was known to the police that situation could flare up, and even after that, how was the SP allowed to go on leave when such an incident was happening? This actually shows the laxity on the part of the administration as well as the local police. Right.
Right, Anshul, thank you for your inputs. One still wonders, behind Anshul, if you could see those pictures, there's a huge huddle of cops standing there. Why are so many cops standing in a huddle there when you have a law and order situation all around? Unless there is some clear bandobast arrangement that's been made, beats me. But ladies and gentlemen, just before we started this edition, or we got on air with this edition of The Right Stand, I was able to speak with Mamta Singh, the ADG Law and Order Haryana. She was on her round. She was just about to get on her rounds. So she just took the time to speak with us for 5 minutes, answering some of the questions. Listen into this conversation. This is Mamta Singh, ADG Law and Order Haryana. पूरे घटनाक्रम पर थोड़ा सा आप बता सकेंगे? कैन यू शेयर सम डिटेल्स हाउ दिस हैपेंड मैम? कल यहाँ पर जो यात्रा हुई थी, यात्रा के ही दौरान में पथराव हुआ और पथराव के बाद में आगजनी और आगजनी के बाद में ये सांप्रदायिक। तो कल जो है जब यहाँ पे यात्रा चल रही थी, यात्रा के दौरान कुछ नारेबाजी हुई है, पथराव हुआ, पथराव के बाद एकदम से आगजनी और ये जो है इस तरह के तनाव के बाद में तोड़फोड़ मारपीट और ये जो आगजनी पथराव की घटना हो गई। But ma'am, many are saying that the cops were caught unawares. They could have prevented this, and they're blaming police in action. आप क्या कहेंगे? नहीं, देखो, I want to agree to it because the intel and whatever information, because this is not the first time this yatra has taken place. This yatra has taken place on previous occasion also, and it has been held very peacefully. And we had deployed around 800 police personnel for the safe security of safety during the yatra. ये जो इंसिडेंट हुआ है एक छोटी सी जो आपकी जो आपस में जो एक होती है जो आप स्लोगन कहते हैं, स्लोगन के बाद में आपस में जो बातचीत और आदान प्रदान हुआ थोड़ा एग्रेसिव भाषा, और उसके बाद पथराव और आगजनी की घटनाएं हो गई है। पथराव के साथ ये इंसिडेंट शुरू हुआ है यात्रा के ऊपर। कहीं आपको डू यू हैव द इंक्लिनेशन टू बिलीव दैट दिस कुड बी प्री प्लान्ड? बिकॉज ये काफी जगह फैल गया है। ऐसा लगा कि अगर लोकलाइज्ड इंसिडेंट होता तो फिर ये आसपास के इलाकों में क्यों फैल गया है? आज भी गुरुग्राम में इंसिडेंट्स हुए हैं। देखिए, ऐसा है जब सांप्रदायिक कोई हिंसा होती है तो उसका असर आसपास के उसमें चला ही जाता है। जब तरह तरह की मीडिया में कई बार अफवाहें फैलती हैं, कई बार इंसिडेंट सही तरीके से जब रिपोर्ट नहीं होता। ये कहना कि प्री प्लान्ड और पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी था, इट इज टू अर्ली टू से दैट। हाउएवर दिस एंगल हैज we will examine during the course of investigation on this aspect also. Ma'am, two final questions. One of the aspects is locals are saying that police did not respond because 11:30 बजे घटना घटी, उसके बाद 3 बजे 3:30 बजे लगभग लोग निकल के आए हैं and they created arson, vandalism, but there were no cops around. The other thing they are saying is that those who want to file FIRs, cops are not filing FIRs. People have been waiting for 3-4 hours, but cops are not filing FIRs. No, I won't agree. This question, we are registering all the FIR. Registering FIR. दूसरी बात आपकी जो थी we came late. Around 2 p.m. the information was received in the state control room and to the senior authorities. Immediately the force from the neighboring districts were rushed. और आने के साथ ही फोर्स ने तुरंत यहाँ पे सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए, कमांड हाथ में लेते हुए, न सिर्फ जो पूरी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को काबू में किया है, बल्कि जो फंसे हुए लोग थे उनको भी इवैक्यूएट किया है। Ma'am, final question. Do you have? Are you cracking down on the guilty? Do you think there will be arrests? Will we see arrests and perhaps also yes, we have identifying the masterminds, if any? We have registered FIR and we have detained people. More than 100 people we have detained, and we are investigating, verifying their role, and whoever evidence are coming against anybody, we are going to arrest them. We are there to crack down. Cybercrime police station that's been burnt down. Do you think there's a sinister motive behind that? Because it's in that area where, which is called the Jamtara of the West, or the Jamtara on this side. So, is there a connection there in terms of motive to burn down that cybercrime police station? No, first thing I would like to clarify that police station is not burned down. Yes, there are certain vehicles standing outside the premise of the police station. 3 or 4 vehicles. The vehicles have been burned down, not the police station. Other question is concerned connection. Again, it is too premature to comment on this. There is a connection. However, we will look into this aspect also during the course of investigation.
So that was Mamta Singh saying 100 people have been detained and they are going to get to the bottom of it, and that there were police personnel deployed, but still things have gone out of hand and they still remain very, very uneasy. We also spoke with one of the victims of what happened, and let's just go straight across. Ved Prakash ji is with us. Ved Prakash ji, 31 तारीख को क्या हुआ था, आप कहाँ थे और क्या घटना घटी? सर 10-11 बजे के करीब नए बस स्टैंड पे झगड़े होने चालू हुए। वहाँ इन्होंने गाड़ियों में आग लगा के और दंगे फिसाद मारना पीटना चालू कर दिया, लूटपाट खटोर चालू कर दी। 11 बजे के बाद इनने करीबन 3-3:30 बजे नई अनाज मंडी जो रोड के ऊपर है उसमें साइबर क्राइम का थाना है, उसको बस ला के उसकी दीवार तोड़ी है, गेट तोड़ने की कोशिश करी गई है। गेट इनसे टूटा नहीं, उस दीवार में 2-3 बार बस मारी है। जब वो दीवार तोड़ के उसमें अंदर घुस के इनने उधम मचाया खूब। हजारों की तादाद में हथियार लेके ये लोग घुसे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, और गाड़ियां जो खड़ी थी सब में आग लगा दी। वो आग लगाने के बाद साइबर क्राइम के सामने ही हमारी आड़त की दुकान है यहाँ 88 नंबर शॉप, उस पर यहाँ हमला बोल दिया। मैं मौके पर मौजूद था। 5-5 किलो के पत्थरों से इनने गाड़ी पे हमला किया है। मैंने शटर नीचे गिर के अपनी जान बचाई है। अगर मैं शटर नहीं बंद करता तो ये मुझे भी जान से मार देते। और इतना उधम मचाने के बाद ये शहर की तरफ निकल गए। फिर इन्होंने शहर में खूब धुम्मस मचाया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 11 बजे का झगड़ा और 3-3:30 बजे अनाज मंडी पे हमला करना, 5 घंटे के अंदर प्रशासन ने हमारी कोई मदद नहीं करी, कोई फोर्स नहीं आई जो हमारी मदद कर सके। हम यहाँ 15-20% की तादाद में हिंदू रह रहा है। प्रशासन के दम पे हम लोग यहाँ जिंदा हैं। प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर पाया। इन्होंने जो 92 में कांड हुआ था मंदिर तोड़ने का, उससे भी ये भयंकर कांड अब किया है। और हमारे स्कूटर में पैसे रखे थे, हम बैंक जमा कराने के लिए जा रहे थे, उस स्कूटर को ले गए और स्कूटर बाहर मंडी के बाहर पड़ा पाया है और कैश उसमें से निकाल लिया। 5 लाख रुपए थे करीबन, और उसे भी ले गए। हमारी जान निठ बची है। मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो हिंदू प्रशासन के ऊपर जिंदा है, क्या उसकी यही बेकदरी होगी? क्या कोई सुनने वाला नहीं, प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। हमारी FIR दर्ज कराने के लिए लड़का कई घंटे से थाने में खड़ा है, उसकी FIR भी दर्ज नहीं कर रही। ये हम लोगों की स्थिति है। मैं तो मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सुनवाई करी जाए और इन दंगाइयों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और इनसे वसूली करी जाए। और करीबन इस झगड़े में मेरा अपना ही 20-25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और शहर में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। भाई सरकार से गुजारिश है कि सब भाइयों के जिनके नुकसान हुए उनकी भरपाई करें और आइंदा इस तरह के ये झगड़ा ना हो, उसकी रोकथाम के लिए हमें पूरी सुरक्षा मुहैया कराएं। वेद प्रकाश जी, आप कितने साल से वहां पर रह रहे हैं नूह में, और कभी आपने देखा इस तरीके का उधम मचता हुआ, इस तरीके के दंगे होते हुए? आपने 92 की बात की थी जी। सर हमारी कई पीढ़ियां निकल गई। हम यहाँ सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं नूह में। हमको यहाँ नूह के नए बासिंदे नहीं हैं। और आप ये समझो सन 92 में एक घटना घटी थी जब अयोध्या में मस्जिद टूटी थी जी। उसके बाद इन्होंने हमारे मंदिरों को पे हमला किया था। अब कहते हैं इनने प्री प्लान हमारी जान माल पे नुकसान किया है, भाई इन्हें मार दो और लूट लो। अब कहते हैं ये कई, और प्रशासन को सारी बातें स्थिति पता थी, प्रशासन ने कोई फोर्स का इंतजाम नहीं किया। हमारा ना कोई बजरंग दल से मतलब है, ना कोई कांग्रेस पार्टी, ना कोई बीजेपी पार्टी से मतलब है। हम लोगों को हमें क्यों इन जान माल का नुकसान इन लोगों ने पहुंचाया? प्रशासन बिल्कुल बेसुध हुआ रहा। मेरी तो भाई यही है जी, हमारी सुनवाई करी जाए और हम सब लोगों का भरपाई करी जाए नुकसान की, और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो हो वो करी जाए। पर आपको क्यों ये लग रहा है कि ये प्री प्लान्ड है, और आपको क्यों लगता है कि लोगों को पता था ये होने वाला है पर होने दिया गया? सर सोशल मीडिया पे कई दिन से ये खबरें आ रही थी। मोनू मोनेसर ने धमकी दी हुई थी, मैं आ रहा हूँ यात्रा में शामिल होऊंगा। भाई मोनू मानेसर आता है तो ये प्रशासन का काम है उसे रोकना। आम जनता को क्यों लूटवा रहे हैं ये? हमारा क्या मोनू मानेसर से लेना देना? आप ये बताओ ना जी, हम लोगों पे जो ये विपदा आई है, हमारा क्या कसूर है इसमें?
आप कह रहे हैं 10:30 बजे के करीब झगड़ा हुआ, 10:30-11 बजे के करीब ये बातचीत झगड़ा होता है और 3 बजे ये पूरे तरीके से उधम मचा है, ये बात सही है? इसलिए आपको ये प्री प्लान लग रहा है? सर 9 बजे इस कस्बे के अंदर से कलश यात्रा निकलती है जी। उसके बाद ये कलश यात्रा नल्लड़ बंदर पर चली जाती है, वहां से ये दोबारा स्टार्ट होनी थी और नया बस अड्डा हमारी मंडी से आधा किलोमीटर आ गई है। वहाँ ये लोग इकट्ठे हो गए काफी भारी तादाद में हथियारों को ले लेकर, वहाँ इनने पहले झगड़ा किया है काफी और उसके बाद 3-3:30 बजे इन्होंने ये मंडी पे हमला बोला है। साइबर क्राइम थाने को पहले तोड़फोड़ मचा के आग लगाई है और उसके बाद इन्होंने ये हमारी मंडी की शॉप बिल्कुल जो सामने है उस पर ये तोड़फोड़ करी है। हमारी होंडा सिटी गाड़ी बिल्कुल चकनाचूर कर दी है इन्होंने, कैमरे तोड़ दिए, बाहर जो भी चीज मिली सब लूटपाट कर ली इनने। लेकिन वेद प्रकाश जी, अगर आप कह रहे हैं कि टारगेट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन था और वहां पर बस लेकर इन्होंने दीवार तोड़ने की कोशिश की, पर आप पर अटैक क्यों किया? आप तो कह रहे हैं आप तो वहीं पे थे, आपका इससे कोई लेना देना नहीं, आप यात्रा का भी हिस्सा नहीं थे, आप तो दुकान पे बैठे थे। तो आपने इनको दंगाइयों से कुछ बात करने की कोशिश की या उनको समझाने की कोशिश की? सर हम तो बात जब करते हैं हमने तो जान बचाई है, ये पत्थर बरसा रहे, हम इनसे बात करने की स्थिति में कहाँ थे? शटर नीचे करके अंदर से लॉक करिए दुकान के अंदर, अगर हम इनके सामने आ जाते हैं जान से मार दे। बात करने का तो कोई मौका ही नहीं थी जो बात करी जाए। दंगाइयों से बात हो सकती है क्या? एक आदमी की मैं आपसे पूछता हूँ, पर लेकिन यहाँ प्रशासन की फोर्स ही नहीं हमारे पास, हम किससे बात करें? प्रशासन कहता है 800 लोग थे, लेकिन इनका कोई लीडर था क्या? ये किसी के कहने पर काम कर रहे थे? आपको क्या लगता है? अब ये तो देखो जी, हम क्या कह सकते हैं, इनका कोई ना कोई तो परिवारिश होगा ही जो ये प्री प्लान करके इन्होंने इतना बड़ा दंगा किया है। कोई एकदम तो हो नहीं गया जी, हथियारों को ले लेके ये आए कस्बे के अंदर। पर 11 बजे से 3 बजे तक आप कह रहे हैं वहां कोई पुलिस बंदोबस्त नहीं था? पुलिस कहती है 800 पुलिस तैनात थी। नहीं, कोई बंदोबस्त नहीं जी, खूब दंगा नहीं। FIR करी, लड़का 3 घंटे से थाने में बैठा है, FIR नहीं लिख रही। नाम बताओ किसने तो हमला किया? हमें क्या पता जी भीड़ में कौन है, हम किसी पहचानते नहीं। भीड़ का हजूम है हजारों की तादाद में, हमें क्या पता कौन कौन है वो। आपके आसपास और भी दुकानों के साथ ऐसा लूटमार हुई है? हमारी दुकान से आगे एक वो अपने चंदीराम स्वीट है, उसमें भी तोड़फोड़ मचाई है और जो गाड़ियां मिल गई वो भी तोड़ी है इनने। वो और भी इनने काफी मंडी में जो 5-7 गाड़ियां खड़ी थी सब में तोड़फोड़ मचाई है। गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, लेकिन जब ये तोड़फोड़ कर रहे थे कोई नारेबाजी हो रही थी? कुछ कह रहे थे ये लोग? क्या कह रहे थे? नहीं जी, कुछ मत तोड़ दो आग लगा दो, तोड़ दो आग लगा दो बस। तो ये कह रहे थे वो। पर हमने तो अपने जान बचाने की सोची है जी, हमने इनकी कोई बात सुनने की तरफ नहीं की, हमने तो शटर बंद कर लिया अपना। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप? भाई सरकार से हमारी यही उम्मीद है भाई, हमारी यहाँ सुरक्षा करी जाए, नहीं तो हिंदू यहाँ से पलायन कर जाएगा। ये एक ही कम्युनिटी का एरिया रह जाएगा, मेवात बन के हिंदू यहाँ से चला जाएगा। हम कुल 20% में तो यहाँ बचे, वो भी नहीं रहेंगे। भाई जो आज हमने भयंकर स्थिति देखी है, हमने अपनी जान बचाई है बड़ी मुश्किल से, भाई हम इस स्थिति में यहाँ रहने के काबिल कहाँ रहेंगे जी? अपने आप मजबूरन यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा। भाई हमारी तो सरकार से गुजारिश है भाई, हमारी यहाँ सुरक्षा मुहैया कराई जाए और हमारे नुकसानों की सब भाइयों की भरपाई करे और इन दंगाइयों को से सख्त जो कानून के वो इस्तेमाल करके इनको सजा दे। वेद प्रकाश जी, एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको ये क्या स्थानीय लोग थे या बाहर से आए हुए थे? नहीं, सारे स्थानीय गांवों के लोग हैं जी, बच्चे हैं 15-20 साल के, जिन्होंने ये हथियार लिए हुए थे, डंडे हथियार हाथ में, और जो ये धुम्मस मचाया, पत्थर बरसाए खूब मन करके। वेद प्रकाश जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आई नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज फॉर यू टू से व्हाट यू हैव सेड एंड आल्सो टू सिट एंड टॉक टू अस हियर।